today let's start with chapter number 4, the habitat of the living. Now in this chapter we will study about the different habitat of different animal. Now let's study the chapter. We all need shelter and shelter provides safety against humanity. Shelter जो होता है वो हमें protect करता है heat से, cold से, rain से, wild animals से and from severity of weather. It protects us from wild animal, protects even from antisocial animal, not only man. Animals also, ऐसा नहीं है कि हमें shelter चाहिए, क्या हम ही घर में रहते हैं? नहीं. Your animals, they also need shelter. We kept parrot in the cage to protect from wild beasts. So habitat is very important. तो जो आपका habitat है वो बहुत ही ज़्यादा important है for all living beings. Now environment, what is environment? It has a great effect on the life. Now, environment has a great effect on life of all living because every organism fulfill its needs from the environment. If there is any change in the environment, अगर कोई भी change हुआ है आपके environment में, इससे क्या होता है आपकी life है जो organism की वो भी disturb हो जाती है. To understand the relationship between living organism with other living organism as well as with non-living things, you have studied about environment and its components. We have two types of components. We have biotic components and abiotic components. Now, all the things present around an organism constitute the environment of that organism. Environment has several components which can be grouped into biotic and abiotic components. जिनको हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड करा है, biotic components and abiotic components. Now, what are biotic components? All living organisms collectively, जितने भी living organism हैं, they are collectively known as biotic components. जैसे आपका biotic और biological environment हो गया, like plants and animals. If we talk about abiotic components, we have all non-living things of environment. They are called biotic components. जितनी भी आपकी non-living things है, air, water, what are these? These all are abiotic components. Now, interaction between biotic components and abiotic components. अब इनके बीच में इंटरेक्शन कैसे होता है? लाइक जो प्लांट्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ. देखो प्लांट्स को खाना बनाना है तो किस प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से. और उसको उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए उनको किसकी नीड होती है? एयर, वाटर एंड सनलाइट. और एयर, वाटर, सनलाइट आपकी क्या है? दे आर एबायोटिक कंपोनेंट. ठीक है, एयर, वाटर, सनलाइट, मिनरल, ये क्या है आपके एबायोटिक कंपोनेंट. नाउ animals eat food produced by plants, that is why they are called consumer. Consumer are further divided into primary consumer, secondary consumer and your tertiary consumer. Primary consumer में आपका herbivores है, animals that eat only plant products like your cow, goat, deer. Secondary consumer like carnivores, lion and tiger. Tertiary consumer your omnivores like men, deer and dog. However, all the consumer depends on plants for food directly and indirectly. Besides, they also need oxygen and water as biotic component for their survival. So, they also depend on abiotic component. There are several other very tiny organisms such as viruses, fungi and bacteria. They cannot be seen with naked eye. इनको हम क्या कहते हैं? Microorganism. ये किस पे फीड करते हैं? ये मेनली डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल पे फीड करते हैं. दे डिकम्पोज डेड एंड डिकेइंग बॉडी इनटू सिंपल न्यूट्रिएंट. और इनको क्या बोला जाता है? डिकम्पोजर. और जो मटेरियल डिकम्पोज करते हैं एंड दे आर एब्जॉर्ब बाय सॉइल, ये क्या करते हैं? बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो होता है सॉइल में उसको मेंटेन करते हैं. राइट. नेक्स्ट इज हैबिटेट. हैबिटेट क्या होता है? प्लेस होती है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है और सुटेबल कंडीशन फाइंड करता है अपने रहने की. सो हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज अ प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म फाइंड सुटेबल कंडीशन फॉर इट्स सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन. नाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, दे आर फाउंड इन डिफरेंट हैबिटेट एंड डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ नीड्स. दे लिव इन द प्लेस वेयर दे कैन फुलफिल देयर नीड्स. Now, if we talk about cattle mostly live in plains where they get enough grasses and food items. Like crow, sparrow, pigeon, they are birds who live near the population of human being where they get food scraps which people throw out. Right?
नाउ फॉरेस्ट इज अनदर इंपॉर्टेंट हैबिटेट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स. जो नंबर ऑफ herbivores हैं सच एज डियर, स्टैग, रैबिट, स्क्वायरल, जैबरा, दे लिव इन द फॉरेस्ट because what they got lot of vegetation as their food. Beside lion, tiger, wolf, fox, hound, they also live in forest so that they could kill herbivores for their food. जिससे क्या कर सकते हैं, herbivores को मार सकते हैं अपने food के लिए. Now your fern and mosses. Fern and mosses they can be found in moist and shady habitat. जो आपके fern होते हैं ना और mosses होते हैं, ये थोड़े आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, शेडी हैबिटेट में. सम प्लांट्स लाइक लोटस ग्रो इन वाटर, सम प्लांट्स हैविंग थिक स्किन ऑफ स्टेम एंड लीव्स लिव इन डेजर्ट वेयर वाटर स्कैंटी. यहाँ पे वाटर क्या होता है, बहुत ज्यादा स्कैंटी होता है, राइट. हैबिटेट इज द स्पेशल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन विच इट लिव्स एंड ग्रो. हैबिटेट ऑफर्स फूड, शेल्टर एंड सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन टू एन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेक इट ब्रीड. वो ब्रीड कर सके, फ्लरिश कर सके या फिर सर्वाइव कर सके. Now to check whether plants found in water habitats can survive on land. जो पानी में रह रहे हैं वो क्या लैंड पे सर्वाइव कर सकते हैं. टेक अ स्मॉल लोटस प्लांट और एनी अदर वाटर प्लांट, उसको आप सॉइल में अपने गार्डन में प्लांट कर दीजिए, आपको ये करना है. देन कीप द प्लांट इन सनलाइट एंड वाटर इट रेगुलरली. आफ्टर 2 or 3 days आपको ये देखने को मिलेगा कि जो प्लांट है वो डाई करने लग जाता है. वाई? बिकॉज उसकी जो हैबिटेट है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है. Now we have 3 most important and common type of habitat: terrestrial, aquatic, terrestrial और desert habitat. Aquatic habitat जहाँ पे water, भाई water लोग जो plants आपके water में रहते हैं. Terrestrial land और desert आपका desert area. Now adaptation. Adaptation is the process which keeps living form in tune with change that occur in the environment. In beginning of 19th century, scientists explained that all living things adapt to their environment by using and developing their organs and characteristics that suit to the environment. Now, this property of plant and animal is called adaptation, and this property also passes from one generation of plant and animal to the another. नाउ एडेप्टेशन इन प्लांट्स और एनिमल वो एक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक टाइम के साथ क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है एंड इनेबल्स देम टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस विद अ हाई इन्वॉल्वमेंट. नाउ जिराफ हैड टू स्ट्रेच इट्स नेक टू ईट द लीव्स ऑफ टॉल प्लांट्स एंड हैंस इट्स नेक बिकम लॉन्ग. और उसकी जो नेक होती है वो कैसी हो जाती है, लॉन्ग हो जाती है. हाउ डज हैबिटेट इफेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स. देखो कैसे जो हैबिटेट होता है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को इफेक्ट करता है. You have studied about the habitat, how plants and animals have adapted themselves. A habitat consists of availability of food, shelter, water, sunlight and suitable climate. Water is one of the most important factor of the habitat. It has a great effect on plants and animals living in a particular. जो plants और animal एक particular habitat में रह रहे हैं वो उनको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं. So on the basis of availability of water, पानी की availability के हिसाब से different habitat plants and animals have developed their adaptive feature. Now adaptation in animals. देखो hydro means water, hydrophytes aquatic plants, mesophytes terrestrial, meso, xero मतलब desert, xerophyte, halophytes means salt tolerant plants, right? These are the different adaptation in plants that we see. Now let me explain them. First is hydrophytes, the plants that lives in plenty of water. इन्हें हम aquatic plants भी कहते हैं. They are free floating water plants, rooted with floating leaves water plant or submerged water plant, right? These are the different types of plants. Now free floating water plants. Some aquatic plants they float freely on the water surface. They remain in contact with water and air but not swim, like pistia or duckweed. Now rooted with floating leaves aquatic plant, right? So there are so many water plants that have root fixed in mud but they have long petioles in their leaves. लेकिन उनकी leaves में क्या होते हैं, long petioles होते हैं. And these plants are soft and weak which reduce the weight of the plant and help them in floating. और उनको help करते हैं float करने में, like your lotus.
your water hylic. These are the example of floating plants. Then we have submerged plant, जो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? Under the water. They remain in contact with only water. For example, like our hydrilla or cherry. What are these? These are submerged aquatic plants. Next is adaptive feature of hydrophytes. As you know, aquatic plants live in water, so they have developed adaptive features to stay in water and adaptation for buoyancy in water and against decaying. For example, water lily or lotus neither drowns in water और कभी उनको wrinkle भी नहीं पड़ता है, आपने अगर नोटिस करा। और जो हाइलिक्स होते हैं उनके एयर सैक्स होते हैं एंड इन देयर स्टेम्स जो उनको फ्लोट करने में सरफेस पे हेल्प करते हैं। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर, देखो पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा है, उसकी वजह से क्या होता है, जो रूट्स होते हैं प्लांट के वो क्या करते हैं, लेस सिग्निफिकेंट होते हैं। सो ईदर दीज प्लांट्स हैव नो रूट्स और उनकी पुअर डेवलप रूट्स होती है। स्टेम्स आर लॉन्ग, स्लेंडर, स्पॉन्जी और फ्लेक्सिबल, जो उनको किसमें हेल्प करती है, वाटर में फ्लोट करने में। एक्वेटिक प्लांट्स हैव वाटरप्रूफ लीफ, जो क्या होता है, उनके प्रोटेक्टिव ऑयली और वैक्सी कोट होता है उनके कहाँ, अपर सरफेस में। वो क्या करते हैं, दे डू नॉट श्रिंक, व्रिंकल और डिस्ट्रॉय, ना तो वो श्रिंक करते हैं, ना व्रिंकल होते हैं और ना ही वो डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट इज मेसोफाइट्स। मेसोफाइट्स आर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स दैट नीड मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर। इनके पास लीव्स होती है which take in air from the atmosphere and roots take in water and the nutrients, like mango, peepal and sunflower. These all are the example of mesophytes. Let's study its adaptive features. जैसे मैंने आपको adaptive features बताए थे हाइड्रोफाइट्स के, हम मेसोफाइट्स के पढ़ते हैं। Since terrestrial plants have taken water and other nutrients from soil, they have well developed roots. इनके well developed roots और root hair होते हैं and roots help them to stay erect on the land. और उनको roots जो होती है वो help करती है to stay erect on the land. The stems of mesophytes is aerial, solid, और इनकी जो branches होती है वो well maintained होती है। The leaves of these plants are broad. देखो जो leaves होंगी वो आपको बड़ी मिलेंगी, large मिलेंगी, broad मिलेंगी और थोड़ी पतली मिलेंगी। They are generally live horizontally to get maximum sunlight. The leaves of these plants do not have any waxy coating. इनके waxing coating नहीं होती और ना ही ये एयर को ट्रैप कर पाते, ना सनलाइट को ट्रैप कर पाते इजीली। Now xerophytes. These are the plants that grow in desert area. ठीक है, and these plants cope with not only scarcity of water, rain, but also with high temperature. देखो पानी तो होता ही नहीं है डेजर्ट में, स्कार्सिटी तो है ही वाटर की भी, रेन की भी, उसके साथ साथ यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। For example, cactus of all types, xerophytes have developed several adaptive features. क्योंकि वो कैसी जगह पर रहते, कैसी कंडीशन में, ड्राई एंड हॉट कंडीशन। नेक्स्ट है adaptive features. Let's study the features of xerophytes. इनकी जो रूट्स होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा लॉन्ग होती है, डीप होती है, as possible to reach water. Like xerophytes alpha alpha has roots which may be more than 30. जो अल्फा अल्फा ग्रास होती है तो उसकी रूट्स होती है वो 30 मीटर लॉन्ग होती है। Leaves of most of the xerophytes are highly reduced and sometimes absent. Like Optinia, the leaves are modified into long slender spine. जैसा आपका ऑस्ट्रेलियन अकाकिया हो गया, लीफ पिटियोल बिहेव्स लाइक अ लीफ। ये जो फीचर होता है आपका xerophyte का, ये क्या करता है, वाटर को प्रिवेंट करता है वाटर लॉस। These plants have thick leathering covering on the stem to prevent loss of water through evaporation, जिसे हम क्या कहते हैं, transpiration. These plants have fleshy stem with water storage tissue as water is scarce in a desert. क्योंकि जो water है वो बहुत ज्यादा क्या है, scarce है। Next is the leaves are covered with large number of sharp spines. देखो जो आपको डेजर्ट में जो प्लांट्स मिलेंगे उनके कांटे होते हैं, स्पाइन्स होते हैं, मतलब उनके थॉर्न्स होते हैं, एंड दीज प्रिवेंट वाटर इवेपोरेशन, और ये प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स, जिससे प्लांट को एनिमल्स खा ना जाए, उसमें कांटे होते हैं। द सरफेस ऑफ द लीफ, जो सरफेस होती है लीफ की वो शाइनिंग होती है, ग्लेज्ड होती है, जो लाइट और हीट से क्या होती है, रिफ्लेक्ट करती है। देन वी हैव हेलोफाइट्स, प्लांट दैट नेचुरली ग्लो वेयर इट्स affected by the salinity in the root area.
such as saline semi-desert, mangrove swamps, marshes. Now what are its adaptive features? Let's study about the adaptive features of halophytes. Halophytes have branched root which comes out only from the soil surface to allow air to enter the soil. जो allow करती है air को कि वो क्या करे, soil में enter करे. They have green small, जो उनकी leaves होगी वो green होगी, छोटी होगी और थोड़ी leathery होगी. Which also have water storage tissue, जिसके अंदर क्या होता है, water storage tissue होता है जिससे water को क्या करते हैं, store करते हैं. Now adaptation in animals. Like plants, animals also live in different types of habitat. They develop some adaptive features. अगर हम बात करें on the basis of different habitats, they are grouped into aquatic animals, amphibians, animals desert, animals on mountain region, and animals on aerial habitat. Now aquatic animals. The animals living in water are called aquatic animals or hydropods. They have developed adaptive features to live in water. They cannot survive on land. वो land पे survive नहीं कर सकते. Let's see some important adaptive features of these animals. Let's study about the adaptive features of aquatic animal. Body of most of aquatic animal is literally compressed to reduce friction in water. The shape of body allows them to swift passage in water while swimming. Now most of the aquatic animals have gills for respiration. Gills use dissolved oxygen. Gills क्या use करती है? Dissolved oxygen in water. Aquatic animals have special appendages called fins, and these maintain balance of their body and help in the movement. ये balance को maintain करती है और movement में help करती है. Aquatic animals have air-filled organs and swim bladder. They maintain buoyancy and also help in swimming and respiration. और ये swimming और respiration में भी help करती है. Now the body of aquatic animals, they are covered with scales. ये scales से covered होती हैं and protect them from decay. The head of the aquatic animal is in conical shape that makes an easy passage in water. Then next is amphibians, the animals that live both on land as well as in water. इनको हम amphibians कहते हैं, like frog, toads, turtle. They live on land. They use water habitat for reproduction only. Amphibians, they have different adaptive features to live in water as well as on land. What are the features, adaptive features? They have streamlined body और enlarged tail होती है. They do not have scales on their body. Their skin is smooth, dry and rich in mucus. It keeps them moist and help in respiration. Respiration में भी help करती है. They have very short neck which has no power of mobility. इनकी बहुत short neck होती है. The frog front pair of leg is short और जो back pair है वो long होते हैं. Its feet are webbed and helps the frog to swim in water. जो two pairs of legs होते हैं वो उनको help करते हैं jump करने में. Frogs have a sticky tongue and insects get stuck in it. The bones of the amphibians are light and spongy. ये क्या करते हैं? Body weight को reduce करते हैं और उनको light बनाते हैं. नेक्स्ट इज एम्फीबियंस जो होते हैं उनके दो फेजेस होते हैं, ठीक है, जिसमें वो रहते हैं. एक तो लार्वा स्टेज होता है, मतलब टेडपूल, व्हेन दे आर फिश, वो स्विम करते हैं वाटर में, एंड व्हेन दे बिकम एडल्ट वो कहाँ चले जाते हैं? लैंड पे चले जाते हैं. नाउ डेजर्ट एनिमल्स, एनिमल्स लिविंग इन डेजर्ट वेयर वाटर इज स्कैंटी, उनको हम ज़ेरोकोल्स कहते हैं. एंड दे आर एडेप्टिव फीचर्स टू सर्वाइव इन डेजर्ट बाय कंजर्वेशन एंड स्टोरेज फीचर्स. So they cope up with scanty water, dry, hot climate, like camels, blackbuck, rattlesnake, chinkara, or nilgai. What are these? These are animals that live in desert. Now, what are its adaptive features? Desert animals, जैसे आपके camel हो गए, they have capacity to store the water in their body. वो अपने hump में क्या करते हैं? Water को store करते हैं. Then their skin is thick which helps to cope with excessive heat and temperature. जो उनकी skin होती है बहुत ज़्यादा thick होती है जिससे वो जो वहाँ का temperature होता है उसको adapt कर लेते हैं. They have padded feet जो उनको help करता है to walk on the sand. जो इनका body temperature होता है वो change करता है with atmospheric temperature, जो loss of moisture को क्या करता है? Reduce करता है. Most of the desert animals are burrowing and nocturnal. It protects them against the scorchy sun और ये prevent करता है excess water loss को. The nostrils are reduced to pinholes or are protected with dew values that protect them from sand.
द आईलिड्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द डेजर्ट एनिमल, वो ट्रांसपेरेंट होती है। कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट होती है, उनको प्रोटेक्ट करती है किससे? सैंड से। पर वो क्या परमिट करती है? विजन। Now animals in the mountain region. We have many animals. Now animals also live in high altitudes in the mountain region where the climate is cold and wintry. They have developed some adaptive features to survive. जैसे कि आप देखते हैं harsh climate. Some important animals जो हमें मिलते हैं वो आपका yak, snow, leopard and polar bear. ये cold temperature को क्या करते हैं? cold temperature में भी क्या करते हैं? survive करते हैं. Now adaptive features क्या है? All the animals living in high altitude, इनके long thick hair होते हैं। कैसे hair होते हैं? Long thick, जो उनकी body को warm रखने में उनकी help करते हैं। Some animals that live on high altitude have strong limbs, जिससे वो क्या करते हैं? Run करते हैं। Like mountain goat. Next we have animals in aerial habitat. We have many animals that live in aerial habitat. Some animals can fly in the air. They have truly adapted themselves on aerial mode of life. Birds, bats, sometimes other animals lives on trees for safety and shelter, like flying squirrel, your lemura flying lizard. What are its different distinctive features? इनकी एक तो streamlined body होती है, जिससे ये क्या करता है? Swift passage through air करते हैं. Skin of birds are covered with feathers. Feathers कैसी होती है? Light होती है, elastic होती है, waterproof होती है, ठीक है, और एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है फ्लाइट में। ये क्या प्रोवाइड करती है? बर्ड्स को वार्म एंड प्रोटेक्शन देती है रेन से। इनकी जो बोन्स होती है बर्ड्स की वो हॉलो होती है, जो क्या कंटेन करती है? एयर कैविटी, और ये क्या ऐड करती है? बॉयंसी ऐड करती है। फोर लिम्स जो होते हैं बर्ड्स की वो मॉडिफाई होते हैं विंग्स में फॉर फ्लाइंग इन द एयर। देन बर्ड्स हैव बीक व्हिच आर यूज्ड टू कैच इंसेक्ट, क्लीन फेदर एंड टू मेक नेस्ट। Birds lack teeth, और जो उनके बिल्स होते हैं they are evolved to perform feeding activities. ये क्या परफॉर्म करते हैं? ये फीडिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। Now we have done with this chapter. Hope you understood about the different animals and their habitat. That's all for today. Now we will meet in the next class. Thank you.